Hi everyone, this side Tripti, and today we have Khushi with us. So Khushi is currently pursuing her CA industrial training at Barclays, which is one of the top global leading banks. And what makes it more special is that Khushi started her articleship journey in a mid-sized firm. So जिन लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन या मिथ होता है कि जो लोग स्मॉल साइज या मिड साइज से आर्टिकलशिप करते हैं दे आर नॉट एबल टू क्रैक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट गुड फर्म्स. सो खुशी विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि उसने कैसे बार्कलेस का प्रोसेस नेविगेट करा एंड विल गेट इनसाइट्स ऑफ हर इंटरव्यू प्रोसेस. हाय खुशी. Hi Tripti, how are you? आई एम गुड. हाउ अबाउट यू? I'm good too. ओके, सो विल स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन कि आपने कहाँ से आर्टिकलशिप करा और आपको थॉट कैसे आया कि यू वांट टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. Okay, so it was 2023 when I cleared my CA intermediate examination. So उसके बाद we had to do two trainings like ITT and OC. So when I was in OC, there was a teacher जिन्होंने हमें बोला सबको कि either you should go for articleship in Big Four or go for if you have articleship in mid-size or small firm, then go for industrial training. बिकॉज उससे आपका रिज्यूमे एनहांस होगा तो वो चीज मेरे माइंड में थी कि मेरे को जाना है पहले तो बिग फोर में. तो मैंने बिग फोर में इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया. मैंने इंटरव्यूज के लिए मेल करना स्टार्ट किया बट मेरा कहीं पे भी रिवर्ट नहीं आया. बट देन मैंने मिड साइज फर्म ज्वाइन किया विच वॉज एनवीएमएन कंपनी. तो एनवीएमएन कंपनी में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने इनिशियल इनिशियल स्टेज में बोल दिया था प्रिंसिपल को दैट आई वांट टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड दे अग्री. इसी मतलब इसी कंडीशन पे मैंने ज्वाइन किया था वहां पे आर्टिकलशिप. तो एनवीएमएन कंपनी में मिक्स एक्सपोजर था ऑफ ऑल द डोमेन्स. तो मेरे को सभी चीज का एक्सपोजर मिला लाइक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, बैंक ऑडिट. तो सब चीज का एक्सपोजर मिला. बट आफ्टर कंप्लीटिंग 12 मंथ्स मेरे को ये लगा था कि सेकेंड ईयर में मेरा रिपीटेशन ऑफ वर्क होगा. बट तो मैंने सोचा कि मेरे को इंडस्ट्रियल के लिए जाना ही है तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. ओके. सो कितने मंथ्स पहले आपने डिसाइड मतलब स्टार्ट कर दिया था टू फाइंड फॉर द अपॉर्चुनिटीज? मैंने आई थिंक मैंने अपना फॉर्म ज्वाइन किया था अगस्त 2023 में. और मैंने फरवरी 2024 में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइन करना स्टार्ट करता था. ओके, सो यू वुड बी एलिजिबल इन अगस्त 24 फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और आपने 5-6 मंथ्स पहले ही स्टार्ट कर दिया था. तो वेयर टू फाइंड राइट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड पर्टिकुलरली अगर हम बार्कलेज का बात करें तो आपको बार्कलेज की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दिखी थी? अब मैंने मतलब मेरे को जहां जहां भी वैकेंसीज मिलती थी आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर दैट. क्योंकि मैं उस चीज का वेट नहीं करती थी वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, क्योंकि मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना था. फेब्रवरी में मेरे को मैंने लिंक्डइन पे स्क्रॉल करना स्टार्ट किया एंड आई सर्च फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने सर्च टैब में सर्च किया और वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई थी. आई यूज्ड टू अप्लाई आई थिंक फॉर 10 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन अ डे. मतलब मैं ओके. 10 मेल्स करती थी डेली बेसिस पे कि जितनी भी कंपनीज मेरे को मिल रही है व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे. तो मैंने हर जगह अप्लाई करना स्टार्ट किया. एंड देन आई फाउंड अ पोस्ट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन बैकलेस. तो वो पोस्ट मेरे को आई थिंक मार्च अप्रैल के अराउंड मिली थी. तो मैंने देखा एंड आई अप्लाइड लाइक एनी अदर कंपनी. तो वहां पे मैंने मेल किया था बस एंड आई मेल्ड कि मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है एंड आई इनक्लोज माई रिज्यूमे अलॉन्ग विद दैट. ओके, सो यू अप्लाइड इन मे. या यू कैन या से. तो मे के बाद कैसा प्रोसेस रहा आफ्टर फाइंडिंग दैट अपॉर्चुनिटी? यू अप्लाइड विद योर सीवी और डिड यू अप्लाई विद योर कवर लेटर ऑल्सो? नो नो, मैं ओनली सीवी से ही मेल करती थी. लाइक आई ड्राफ्टेड अ मेल कि जो मेल, फॉर एग्जांपल आई ड्राफ्टेड अ मेल तो उसमें बस जो भी डोमेन होता था वो और जिस भी कंपनी का नेम होता था वो चेंज हो जाता था. और वो सेम मेल आई यूज टू कॉपी पेस्ट ओके. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ओके, गॉट और इट. सेम सीवी. हम्म. तो ये मेल करने के कितने बाद आपको कुछ रिवर्ट आया उनके साइड से कि आपका इंटरव्यू होगा या फिर कुछ होगा, सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, एनीथिंग लाइक दैट? ओके, तो मेल करने के आई थिंक 1 मंथ, जून, यस, जून में मेरे को, जून के स्टार्टिंग में मेरे को आया था प्री प्लेसमेंट टॉक का मेल
कि I got a notification from Barclays that there is a pre-placement talk. You have to join it. तो वहाँ पे एक लिंक था टीम्स का. तो आई ज्वाइंड इट. वहाँ पे 400 स्टूडेंट्स थे अप्रॉक्स एंड दे शेयर्ड अबाउट बार्कलेज कि बार्कलेज क्या है और व्हेन इट वाज स्टार्टेड एंड विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ बार्कलेज. Like they provide opportunities to their old employees as well who left Barclays. तो वो उन्होंने बार्कलेज के अराउंड ही इट वाज ऑफ 30-40 मिनट सेशन ओनली. एंड देन आई गॉट टू नो कि इट वाज नॉट रिलेटेड टू इंटरव्यू. ओके, तो ऑल उसके राइट. बाद उन्होंने बोला कि यस. तो उन्होंने ये भी बताया था कि आपको 4 डोमेन्स में आर्टिकल्स लाइक यू विल गेट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन 4 डोमेन्स. तो इट वाज ऑल अबाउट Okay, can you प्री mention प्लेसमेंट. those four domains in which Barclays is offering industrial training? ओके. तो मेरा डोमेन तो स्ट्रेस टेस्टिंग एंड इम्पेयरमेंट है. बट देर आर अदर डोमेन्स एज वेल लाइक ट्रेजरी एंड प्रोडक्ट कंट्रोल. Okay, okay. So after this pre-placement talk in which you got to know about the vision, mission, and everything about Barclays, after how many days did you receive a interview mail or any communication sort of thing? ओके. तो इंटरव्यू के लिए आई थिंक 10th और 12th ऑफ जून तक मेरा इंटरव्यू का मेल आ गया था दैट माई इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड ऑन 28th ऑफ जून. तो 28th ऑफ जून इज माई ब्रदर्स बर्थडे. तो इसलिए Okay. मेरे को वो डेट भी याद है कि मेरा इंटरव्यू उस दिन हुआ था. एंड Hmm. आई वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड बिकॉज उसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उसमें देर वॉज नथिंग. इट वॉज मेंशन कि आपका किस डोमेन में होने वाला इंटरव्यू. तो Okay. इट वॉज लाइक एनोनिमस. Okay. So in Barclays, we don't get to choose our domain. या. Okay. So domains are basically allocated based on your interview. हम्म. यस. Okay. So you received a interview mail, and can you tell us about the questions that you were asked in the interview? Who took your interview? How long it was, and everything about your interview experience? ओके. तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा सा चैलेंजिंग था बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द क्वेश्चन व्हिच दे विल बी आस्किंग. तो उसी दिन मैंने इंडेक्स 36 रिवाइज किया था लाइक बाय गॉड ग्रेस. तो इट वाज ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. Hmm. तो मेरा जो डोमेन है वो इम्पेयरमेंट ही है, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को तो बेसिक क्वेश्चन विच वी ऑल नो कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. Hmm. उतने में दे गेट टाइम कि वो आपका रिज्यूमे थोड़ा सा स्किम कर लेते हैं. तो मेरे से जितना भी मैंने रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ था सब कुछ उन्होंने पूछ लिया 30 मिनट में लिटरली. मतलब इवन एक सिंगल थिंग भी नहीं बची थी जो उन्होंने ना पूछी हो. मेरा पूरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ माई आर्टिकलशिप दे आस्क्ड इन 30 मिनट. Hmm. तो पहले तो उन्होंने इम्पेयरमेंट के बारे में पूछा व्हाट इज फॉर्म 15 CACB ऑफ इनकम टैक्स. दे आस्क्ड अबाउट बैंक ऑडिट. हाउ डू वी चेक लोन्स एंड एडवांसेस. व्हाट इज सैंक्शन लेटर्स. एंड दे आस्क्ड अबाउट DTC ऑडिट. लाइक आई हैड वन ऑडिट ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड दे आस्क्ड अबाउट द सेम. तो यही क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मेरे से पूछे थे. And Okay. they also asked about vision and mission statement of Barclays, and I answered that so well because I attended pre-placement of Hmm. session, so I was aware about that. So, like they appreciated this thing that like they were happy कि मेरे को vision and mission statement Barclays पता था. Okay, so if I sum up this, so basically, if we are interviewing to any company, we should know about the company कि उसके recent around कुछ भी news चल रहा है या फिर कुछ भी है और हम अपना articleship experience अच्छे से पता होना चाहिए because the people who are taking our interview are vice presidents and director, so they would easily catch कि हमने कुछ बफर तो नहीं करा हुआ, हमने कुछ ब्लफ तो नहीं करा हुआ, सॉरी. तो I think Yes. firstly we should know about the company, then we should know about our articleship experience in a brief manner, and anything apart from your articleship that was asked to you. I don't think so. Anything else? Like, they can't even expect you to answer those questions on which they work. Like, impairment of financial instrument is not there in CA finance tables, or if it is there, so what the like hardly 1% or 2% of financial instrument will be there. तो वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपको कि वो जो काम करते हैं वो आपको आता हो. तो Mhm. दे विल आस्क ओनली द थिंग्स यू ऑलरेडी नो.
or दे you विल have worked एक्सपेक्ट on. यू टू अंडरस्टैंड कि आपने आर्टिकलशिप में एक्चुअली क्या करा है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आई थिंक यू शुड कम्प्लीटली नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर आर्टिकलशिप कि आपने कौन सा टैक्स ऑडिट करा है, आपके कौन से क्लाइंट्स थे, क्लाइंट्स का बैकग्राउंड क्या था। ओके, सो दिस वॉज योर Yes. दिस वॉज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। उसके कितने दिनों बाद आपको सिलेक्शन का मेल आया या फिर उसके बाद भी आपका कोई इंटरव्यू हुआ और दिस वॉज द फाइनल नहीं, राउंड? हाँ, this was the final round, but after 2 to 3 days, or you can say 1 week. So 1 week के around मेरे को call आया from HR कि you are selected for Chennai location. So I was in metro and I came from audit. So मैंने बोला उनको that no, sorry, they said कि if you will be selected, will you be able to come to Chennai for Barclays, like for Barclays industrial training? I said yes, of course. I'll be able to like ज्वाइन। relocate. तो yes, join. तो उन्होंने मेरे को आई थिंक 2 to 3 hours के बाद ही मेरे को कंग्रेचुलेशन मेल भेज दिया था दैट यू आर सिलेक्टेड. तो आई थिंक 1 week लगा था वो मेल आने Okay, so Barclays is offering industrial training at Delhi, Pune, and Chennai. में. Yes. Yeah, so initially you were offered Chennai ka location, but then you got transferred to Delhi. Yes, then I transferred it to Noida. Sorry, yeah, तो Noida. या तो देयर वाज अ स्टोरी लाइक मेरे को ऑफर लेटर रिसीव हुआ था ऑन 15th of October. लाइक आई रिसीव्ड मेल रिगार्डिंग कंग्रेचुलेशन मेल इन जून एंड और यू कैन से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, बट मेरे को ऑफर लेटर रिसीव होने में टाइम लगा बिकॉज ऑफ सम कंप्लाइंसेस इन बाकी पोर्टल. तो Okay. जब वो मेल रिसीव हुआ उसके मॉर्निंग में, मेल रिसीव होने से पहले मॉर्निंग में एचआर का कॉल आता है दैट यू हैव टू शेयर योर डिटेल्स फॉर फ्लाइट एंड होटल्स अकोमोडेशन फॉर 15 days इन चेन्नई. तो मैंने कहा ओके. देन उसके बाद ही बिफोर शेयरिंग डिटेल्स मेरे पास ऑफर लेटर आ गया एंड आई रिसीव्ड इट, आई चेक्ड इट. तो उसमें मेंशन था नोएडा लोकेशन. Hmm. तो मैंने बोला कि आई वाज कंफ्यूज कि मेरा चेन्नई के लिए सिलेक्शन हुआ है या नोएडा के लिए. तो फिर मैंने एचआर को कॉल किया एंड दे सेड कि उन्होंने बोला कि देयर वाज वन वैकेंसी इन नोएडा ब्रांच, तो हमने आपको शिफ्ट कर दिया. तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा नोएडा में हो गया था. Yes, yes, yes. So, what is the stipend that Barclays is offering to its industrial trainees and any other facilities that Barclays is offering? यस. तो बार्कलेज का स्टाइपेंड इनिशियली इट वाज 25K फॉर 2024 बैच, बट Okay, and in 2025 बैच 2024 के लिए batch, sorry to interrupt, in 2024 batch, 40 students were selected, if I'm right. यस ओनली 40 स्टूडेंट्स So वर out of सिलेक्टेड बिकॉज 40 400 students who appeared for the pre-placement talk, so 10%, only 40 of them got the final offer letter. या. Yeah, okay, continue. Okay, so in 2024 it was 25K, but 2025 में it increased to 40K. तो 40K हो गया था, बट जो पहले वाले बचे 2024 के जो सेशन था, दे फॉट फॉर इट कि हमें भी 40K होना चाहिए स्टाइपेंड. एंड दे आर Right. करेक्ट बिकॉज वी ऑल नो लाइक मोर देन फ्रेशर्स हु विल बी जॉइनिंग इन 2025. तो इसलिए फिर हम सबका भी 40K हो गया. एंड अदर एमिनिटीज दे प्रोवाइड फ्री फूड and free cab facilities, like cab facility for pick and drop both. And I don't think so they'll provide it. Okay, so you get free food And whenever you go to office and cab facilities. yes, and if you will be relocating to other states like Chennai, on like if you are from other state and you will relocate to Noida or any other branch of Barclays, so you will get 15 days accommodation and first time transportation like travel facility. Okay, that's cool. So, Kushi, can you give us a glimpse of your day at Barclays? What type of work you do there, and what are the work timings? How is it different from articleship? Okay, so articleship में like I used to go office daily basis, like it was Monday to Saturday. But यहाँ Okay. पे it is Monday to Friday Hmm. and it is hybrid. So we have to go to office twice a week, and which is Monday and Wednesday. Baकी days work from home. And office timings are approx 12 to 7 or 8. You can log out at 8.
and you have to log in at 12 because it is UK shift. Hmm. एंड अगर जो हमारा मतलब जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ, इट इज क्रेडिट रिस्क इम्पेयरमेंट रिपोर्टिंग टीम. तो इम्पेयरमेंट रिपोर्टिंग टीम में भी स्पेसिफिक सेक्शन इफ आई हाईलाइट, तो विच इज मैनेजमेंट एडजस्टमेंट सेक्शन, पोस्ट विच इज पीएमए, पोस्ट मैनेजमेंट एडजस्टमेंट. पीएमए में व्हाट वी डू कि जितने भी स्टॉक होते हैं विच इज ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट स्टॉक, उसमें इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या फिर अदर एडजस्टमेंट की वजह से कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वी वी इंट्रोड्यूस अ पीएमए फॉर दैट विच इज एडजस्टमेंट. तो उसके बाद वी गेट द टोटल इम्पेयरमेंट नंबर. एंड पीएमए इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस. इट कैन इंक्रीज एंड इट कैन डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर. तो उसका काम हमारा हार्डली ट्वाइस अ ईयर होता है. हार्डली ट्वाइस अ ईयर बिकॉज H1 रिपोर्टिंग होता है एंड ईयर एंड रिपोर्टिंग होता है, जिसमें 3 to 4 months ही हेक्टिक होता है, जिसमें यू Hmm. हैव टू वर्क टिल मिडनाइट एंड लाइक you are working on weekends as well. So that is only for 2 to 3 months, and like you'll get the relief and the timings are also lenient. So it's nice comparatively. Okay. Artificial. Okay, so apart from 3 to 4 months of peak period where you have to log in midnight and also do work on weekends, so the rest time of the year are pretty much chill, I think. Yes, it is. Okay, okay. So if you have to give advice to any junior कि हमको आर्टिकलशिप के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, so what advice would you give and include those things which one should remember while applying for industrial training also? ओके, तो विच वन शुड रिमेम्बर, इसका आंसर मेरे पास है कि आप स्टार्ट कर दो अप्लाइंग फॉर योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. आई थिंक अप्रोक्स 3 to 4 months पहले तो स्टार्ट ही कर दो, Hmm. क्योंकि अगर आपका न्यू न्यू स्कीम है, देन यू हैव टू जॉइन योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आफ्टर 12 months ऑफ योर आर्टिकलशिप. तो आई थिंक 3 to 4 months पहले कर ज्वाइन करना स्टार्ट साइन करना स्टार्ट कर दो. स्टार्ट अप्लाइंग फॉर ऑल द कंपनीज, मेक द लिस्ट ऑफ द कंपनीज फॉर विच यू वांट टू ज्वाइन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. और if you get the opportunity to join, then you should join because आपको वहाँ corporate experience मिलता है, which is totally different from like mid-sized firm or small firm at least. Okay. And just like you mentioned कि 400 students थे pre-placement talk में and out of them 40 students only got finally the mail of selection. So उनका जो CV shortlist process होता होगा वो भी काफी rigor होता होगा. तो what advice would you like to give to the viewers कि हमको CV कैसे draft करना चाहिए? Okay, so CV should be short and simple, and it should not be loaded with a lot of things. तो सीवी में आप जो जो चीज मेंशन करो, यू शुड नो इट बिकॉज इंटरव्यू उसी पे बेस्ड होने वाला है. तो सीवी में यू कैन मेंशन एवरीथिंग विच यू हैव लर्न इन योर आर्टिकलशिप एंड अदर स्किल्स. लाइक यू कैन ऐड सर्टिफिकेशन कोर्सेज विच यू हैव डन इन योर स्कूल्स और कॉलेजेस, और यू कैन मेंशन एनी स्किल्स विच कैन एनहांस योर सीवी. ओके, सो बेसिकली वी शुड नॉट ब्लफ इन आर सीवी. एंड जैसे आपने बताया कि आपने प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड करा, उसमें आपको 4 डोमेन्स के बारे में बता दिया, उसमें एक डोमेन इम्पेयरमेंट भी था, तो आपने उसका इंडेक्स रीड कर लिया एंड दैट वर्कड इन योर फेवर इन द इंटरव्यू. सो द एडवाइस इज बेसिकली अगर हमको पता है, जैसे इन माई एक्सपीरियंस ऑल्सो द HR गिव्स यू अ हिंट ऑफ द डोमेन और द पर्सन हु कॉल्स यू फॉर द कॉल gives you a hint of the domain. So you should firstly read about that domain and you should read about the company, any recent news around it, so that you don't feel nervous whenever a question is thrown to you, right? Yes, I agree on this. Yeah. So any last message? Okay, so if you get opportunity to join any industrial training, you must go for it. Okay, okay, Khushi. You have any other question, you can ask me. Yeah, so we'll drop the LinkedIn ID of Khushi in the description box. And if you have any questions, also you can drop in the comments, and Khushi will be happy to answer, right? Yes, yes. Okay, okay. Thank you, Khushi, for your time. Thank you. Thank you, Tripti. Okay, bye. Bye bye.